નમસ્કાર સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, સનાતન ભારતીય હિન્દુ સંસ્કૃતિ જીવંત છે. તેની પાછળ મુખ્ય કારણ કોઈ હોય તો સાધુ સંતોનું છે. સાધુ સંતોના અનેક વર્ષોના તપશ્ચર્યા બાદ સનાતન ભારતીય હિન્દુ સંસ્કૃતિ જીવંત છે અને યુવાનો પણ તે માર્ગે પ્રેરિત થાય છે. સનાતન ભારતીય હિન્દુ સંસ્કૃતિની વાત કરીએ તો અનેક સંતો મહંતો અનેક જગ્યાએથી જ ધર્મનું સંચાલન કરી રહ્યા છે. સાચા અર્થમાં ધર્મ ભક્તિ અને જ્ઞાનને અર્થે જ યુવાનો જીવતા હોય તો તે મુખ્ય કારણ એટલે કે મેઇન રીઝન કોઈની પાછળ મોટો ચહેરો હોય તો તે સંતો મહંતોનો છે. સંતો મહંતો પોતાના આખું જીવન સમર્પિત કરી દેતા હોય છે. અનેક રીતે યુવાનો સાચા અર્થમાં નિર્વ્યસની થાય, સાચા અર્થમાં ધર્મને આધારે જીવે, તે અંતર્ગત સંતો મહંતોનો સિંહ ફાળો રહેલો છે. યોગ અને આ યોગ થકી તમે ભલભલી વસ્તુ એચીવ કરી શકો છો. જીવનમાં સક્સેસ જ્યારે આપણને તણાવ આવતો હોય, જ્યારે સ્ટ્રેસ ઊભું થતું હોય ત્યારે યોગાની ખૂબ અનિવાર્યતા હોય છે. અને યોગ થકી જ આપણે સૌ એવા સેલિબ્રિટીઝથી માંડીને રાજનેતાથી માંડીને તમામ ઔદ્યોગિક જગતના મોટા ઉદ્યોગપતિઓ પણ યોગને વરેલા હોય છે. યોગ કરવાથી બોડીની સાથે સાથે મન પણ હળવું રહેતું હોય છે. યોગના ઘણા બધા ફાયદા છે. આજે વડોદરા શહેરમાં એક એવો ઇવેન્ટ યોજાવા જઈ રહ્યું છે. એ ઇવેન્ટનું નામ છે સક્સેસ ઇન લાઈફ થ્રુ ધ ક્રિયા યોગા. ખૂબ મોટો ઇવેન્ટ છે. આ ઇવેન્ટનો મર્મ યુવાનો સાચા અર્થમાં યોગ તરફ વળે, યુવાનોને સાચા અર્થમાં મોટિવેટ થાય, યુવાનો સાચા અર્થમાં જ પોતે ધારેલું એક ડેસ્ટિનેશન ત્યાં સક્સેસ પહોંચી શકે. અનેક સંઘર્ષો પછી ક્યારેક યુવાનો પોતાનું જે માર્ગ હોય છે, પોતાનો જે ફિલ્ડ હોય છે તે છોડી દેતા હોય છે. પરંતુ યોગ એ આપણા માઇન્ડને રિલેક્સ બનાવે છે અને જે વસ્તુ, જે મંજિલ છે તે હાસિલ કરવા માટે આપણને કટિબદ્ધ કરતા હોય છે. આજે અમારી વચ્ચે જ જેઓ પુરીથી પધાર્યા છે, પ્રજ્ઞાનંદજી મહારાજ. महाराज श्री बहुत बहुत स्वागत है स्पार्क टुडे न्यूज़ में. તેઓની પાસેથી વિશેષ માહિતી મેળવીશું કે આ ક્રિયાયોગ, સક્સેસ ઇન લાઈફ થ્રુ ક્રિયાયોગ એ શું છે, કેવી રીતે છે, ક્યારે યોજાવાનું છે, તમામ બાબતે તેઓની પાસેથી જ માહિતી લઈશું. महाराज, आज शाम को सक्सेस इन लाइफ थ्रू क्रिया योगा एक बड़ा सा इवेंट है. आप बड़ौदा के मेहमान बने हुए. पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि पुरी से यहाँ पे आए हो, बड़ौदा के मेहमान बने हो, क्या कहना चाहोगे? गुजरात भारत के एक महान प्रदेश है और उसमें बड़ौदा मेरे लिए तो ऋषि श्री अरविंद, आचार्य विनोबा आदि महापुरुषों के कर्मस्थल बने. तो ये मेरा बड़ौदा को आना तृतीय बार है. बड़ौदा मेरे प्रिय है एवं यहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु भी है. बोलो जी महाराज, यहाँ पे आके आपने क्या महसूस किया? 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई. वहाँ पे भी भव्यातित भव्य दिवाली जैसा माहौल था. आप जब बड़ौदा की धरती पे आए, क्या महसूस किया? भगवान की कृपा से उस दिन हम वहाँ भी थे. भगवान राम जी सबके हृदय में है. भगवान राम जी सिर्फ भारतीय संस्कृति धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है. भगवान राम जी सारे विश्व के मानव धर्म के आदर्श पुरुष है. भगवान राम हम बोलते हैं सिया राम मैं सब जगह जानी. फिर उसी के अलावा मंदिर एक स्वाभिमान और मंदिर एक भारत के नवजागरण के प्रतीक है. इसी विचार को लेकर हम यहाँ भी आए हैं. जी महाराज, आज शाम को क्रिया योगा एक बहुत बड़ा इवेंट है. आज के जो युवा वर्ग है, यानी जो यंग जनरेशन है, सक्सेस पाने के लिए कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. लेकिन योगा की बात करें तो योगा का मेन रोल सक्सेस में होता है. जब भी आपके लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो आज क्रिया योगा रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा सा इवेंट है. उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हम जीवन में अच्छे स्वास्थ्य चाहते हैं, अच्छे ब्रेन पावर, स्मरण शक्ति चाहते हैं, मन को शांत, तनाव से मुक्त, टेंशन फ्री रखना चाहते हैं, जीवन में शांति आनंद भी चाहते हैं. अगर कैसे आजकल के ज़माने में हम दुनिया भर घूमते हैं और देखते हैं कि लोगों ने इतने रोगों से पीड़ित है, मन अशांत है और बच्चों लोग से शुरू करके वृद्ध सब भी
दौड़ते हैं, अगर क्यों दौड़ते हैं उसको भी पता नहीं है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए, स्वास्थ्य सुंदर हो, मन सुंदर हो, स्मृति सुंदर हो, जीवन सुंदर हो, उसी का मार्ग ध्यान प्रक्रिया है। ध्यान करने से शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, आत्मिक विकास, सबका विकास एककालीन होता है। क्रिया योग एक अत्यंत प्राचीन ध्यान कौशल है, जिसका वर्णन उपनिषदों में है, वेदों में है, पुराण में है। अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है कि लक्ष्मण जी पूछते हैं भगवान राम जी को, आप इतने प्रसन्न और सुंदर कैसे लगते हो? वो बोलते हैं, खुद बोलते हैं, मैं क्रिया योग का अभ्यास, क्रिया योग शब्द का प्रयोग किए हैं अध्यात्म रामायण में, मैं क्रिया योग अभ्यास करके अभी उठा हूँ। तो उसका अर्थ होता है भगवान राम जी भी क्रिया योग का अभ्यास किए हैं। भगवान कृष्ण योगी ही थे, योगेश्वर कृष्ण। योग साधना भारत की समग्र विश्व के लिए एक महान देन है और सारे विश्व मानते हैं। और इसी योग परंपरा में क्रिया योग सर्वप्राचीन योग साधना है, जिस साधना सत्य युग का साधना है, मेरे गुरुदेव ने बोलते थे। और युग युगांतर से उत्थान पतन के राह पर हम गए हैं। इस क्रिया योग अभी आधुनिक भारतवर्ष में महाअवतार बाबा जी ने 1861 साल में पुनः अपने गृही शिष्य के माध्यम से क्रिया योग का प्रवर्तन फिर दुनिया में किए हैं, जिसका अभ्यास अब सारे विश्व में हर देश में लोगों ने अभ्यास करते हैं। जी महाराज, आज के युवाओं की, आज का यंग जनरेशन की लाइफ देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं स्क्रीन टच लाइफ में बहुत ही जुड़े हुए हैं। कहीं पे ध्यान करने का उनको टाइम नहीं मिलता है। मंदिर पूजा पाठ की बात करें तो वो भी टाइम नहीं मिलता है। वो रिगार्डिंग यंगस्टरों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, क्रिया योग के साधना के जो माध्यम है श्वास, बच्चे हो या बूढ़े हो, हम सब श्वास लेते हैं। आप जो भी काम करते हैं, श्वास नहीं है तो काम नहीं है, श्वास नहीं है तो दुकान नहीं है, श्वास नहीं है तो पढ़ाई नहीं है। और श्वास के एक सूत्र हम बोल देते हैं, यहाँ याद रखिए और ध्यान देकर सुनिए। तो हम जब गुस्सा में है, श्वास कैसे हैं? हम जब चंचल है, हमारे श्वास कैसे हैं? हम जब सो जाते हैं, हमारे श्वास कैसे हैं? युवाओं के लिए श्वास के नियंत्रण के एक सहज कौशल और अभ्यास कर सकते हैं, जो अभ्यास करने से पढ़ाई भी ठीक होगी। परीक्षा को जाओ, मन शांत हो जाएगा तो परीक्षा में सफलता मिलेगी। दैनंदिन जीवन में व्यापार हो, नौकरी हो, जहाँ जो कुछ काम है, श्वास को पकड़ करके काम करो तो मन भी एकाग्र और शांत रहेगा और जीवन में सफल बने, आप पाएंगे, सफलता मिलेगा। जी महाराज श्री, आपके गुरु उन्होंने एक बुक लिखी है, वो बुक बहुत ही चर्चित है। पहले तो आपका गुरु जी का परिचय चाहिए। हम जो क्रिया योग के बारे में बोले, आधुनिक भारतवर्ष में क्रिया योग परंपरा के आदि गुरु हम तो भगवान को मानते हैं। उनके प्रतिरूप से महाअवतार बाबा जी, महामुनि बाबा जी बोलते हैं, जिसका उम्र हजारों साल है। उनके शिष्य गृही योगी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय काशी वाले थे। उनके शिष्यों के शिष्य, दो शिष्यों के नाम हम बोलते हैं, मेरे गुरुदेव परमहंस हरिहरानंद जी, उनके बड़े गुरु भाई परमहंस योगानंद जी। परमहंस योगानंद जी स्वामी विवेकानंद जी के बाद दूसरा भारतीय संत जो विदेश गए, और उनका जो लिखा हुआ ग्रंथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगी कथामृत, भारत के सभी भाषाओं, विदेश में जितने भाषा है, हर भाषाओं में प्रकाशित है। करोड़ों करोड़ों संख्या के प्रति लोगों ने पढ़े हैं। अमेरिका में कई विश्वविद्यालय में पाठ्य पुस्तक है योगी कथामृत। और ऐसा तो है, जैसे हम भारत में स्वामी विवेकानंद के नाम हम आम आदमी सुनते हैं, विदेश में कोई भी आध्यात्म रास्ते पर राह पर आए हैं, वो परमहंस योगानंद जी के नाम ऐसे ही सुने हैं। भारत में जैसे विवेकानंद जी, विदेश में ऐसे ही योगानंद जी। वो विदेश में 1920 से 1952 तक
इतना भारी तेज से क्रिया योग, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा, शाकाहारी भोजन का प्रचार किए हैं, उसका ये नहीं है, पटांतर नहीं है, इतने काम किए हैं। જી મહારાજ, કેમેરામેનને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આ જે બે સંતો છે તે તેઓના ગુરુ છે અને જે પ્રમાણે સ્વામી વિવેકાનંદજીની છાપ હતી તેવી જ છાપ તેઓની હતી. પરમહંસ યોગાનંદ જેઓએ એક બુક પણ લખી છે, પરંતુ તે પહેલાંની વાત કરું અને તેઓનો પરિચય આપું તો વિદેશની અંદર જે પણ લોકો ભક્તિ અને આધ્યાત્મના માર્ગે જોડાયા છે તો તેઓનો સિંહ ફાળો રહ્યો છે. મહારાજ શ્રી, ये बुक जो बुक लिखी है पहले तो उसका नाम ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उनका जो योगी कथामृत। योगी कथामृत. योगी कथामृत लिखने के बाद कई लोगों के जीवन में चेंजेस आया है, वो भी सुने, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, मैं तो मेरा बात बोलता हूँ। मैं जब विद्यार्थी था, कॉलेज में पढ़ता था, उसी किताब को पाया और पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। और उसको देख कर के मेरे मित्र ने बोला कि उनका तस्वीर ऐसा था कि वो बोला कि तुम मोनालिसा को पकड़ करके सोते हो। योगी कथामृत पढ़ कर के मेरा जीवन बदल गया, इसी रास्ते पर मैं आने लगा। तो भारत में हो या विदेश में हो, जो आध्यात्म रास्ते पर आते हैं तो उसको पढ़ना चाहिए योगी कथामृत। और पढ़ने से ज़्यादा नहीं होगा तो जो क्रिया योग साधन करके वो ऊपर उठे, जिस क्रिया योग साधना करके भारत में क्यों सारे विश्व में करोड़ों करोड़ों लोग इसी रास्ते पर आए हैं अभी 150 साल में, तो उसी रास्ते को अपनाएं, साधना करो, जीवन को सफल बनाओ, योग करो, योगी बनो। हम घर में रह कर के संसारी होकर भी योगी बन सकते हैं, सफल बन सकते हैं, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में और अपने व्यक्तिगत अध्यात्म जीवन में। જી, કેવળ બુકથી એટલે કે કેવળ બુક વાંચવાથી નહીં, પરંતુ આ એક ક્રિયાયોગ જે આજે ઇવેન્ટ છે વડોદરા શહેરના નિઝામપુરા વિસ્તારમાં રાખવામાં આવી છે અને આ જ ઇવેન્ટમાં ભાગ લેવાથી ઘણા બધા જીવનમાં ચેન્જીસ થાય છે, સક્સેસ પણ મળે છે તેવી એક વાત સામે આવી રહી છે. મહારાજ, ये आज जो क्रियायोग एक बहुत बड़ा सा इवेंट है, एडवांटेजेस क्या है आज के युवाओं को, इसके बारे में कौन क्या बोल सकते हो, फायदे क्या बोल सकते हैं? You will be successful in your life in every way if you really meditate 5 to 10 minutes टेक्निक लाइक क्रिया योगा। जीवन में 10-15 मिनट, 5-10 मिनट बैठ कर के क्रिया योग के माफिक कोई भी ध्यान कौशल अभ्यास करो और जीवन को सुंदर बनाओ। ध्यान करो, योगी बनो और जीवन सफल बने, इतना ही। તો મિત્રો, આ એક જે ઇવેન્ટ છે નિઝામપુરા ખાતે જ તે ફ્રી ઓફ એન્ટ્રી રાખવામાં આવી છે. કેમેરામેનને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આ સક્સેસ ઇન લાઈફ થ્રુ ધ ક્રિયા યોગા પર ફોકસ કરે. આ એક ઇવેન્ટ વડોદરા શહેરના તમામ યુવાનો માટે ફ્રી ઓફ એન્ટ્રી રાખવામાં આવી છે. કોઈ પણ રાજ્યમાંથી આવ્યા હોય, કોઈ પણ દેશમાંથી આવ્યા હોય, તો આ એક ક્રિયા યોગા દ્વારા જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવતું હશે અને સક્સેસ મળતી હશે. મહારાજ શ્રીને ઘણો બધો ઝાઝો અનુભવ છે અને તેઓના ગુરુ દ્વારા જે લખવામાં આવેલી બુકનું પઠન કરતાં તેઓએ વાત કરી કે તેનાથી ઉપર લાઈફ જીવવું છે, એટલે કે તેનાથી વધારે સક્સેસ મેળવવો છે. તો આ એક ક્રિયા યોગા એક એવું માધ્યમ છે જેના થકી જ આ તમામ બાબતે सक्सेस મળી શકે છે. મહારાજ શ્રી, एक क्वेश्चन, राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहाँ पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, जबकि बात सनातन की आती है। मैंने आपके बारे में कई बार सुना है, आप सनातन धर्म के फैलाने के लिए सभी यंगस्टर है उन लोग को एक अवेयरनेस, एक अलर्टनेस बोल सकते हैं, वो लाते हो। राम मंदिर बनने के बाद क्या हिंदू परंपरागत ये जो सनातन की बात चलती है वो लंबी, यानी बोल सकते हैं कि कई देर तक, कई सालों तक ये जीवंत रहेगी, कि अपने को क्या करना चाहिए? देखो, हम जब सनातनी बोलते हैं तो हम शाश्वत है। हमारे परंपरा, हमारे आदर्श, हमारे जीवन दर्शन उत्थान पतन देकर थोड़ा गया है। अगर वो शाश्वत रहेगा, हजारों साल के पराधीनता हो, सांस्कृतिक अवक्षय हो जो हुआ है, उसका पुनरुत्थान, पुनर्जागरण हो रहा है। अयोध्या में राम जी के मंदिर और बालक रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा हुआ, एक नवयुग का उन्मेष हुआ, नवजीवन का जागरण हुआ है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभूति और विश्वास ही है। महाराज श्री, मथुरा में मंदिर में पूजा करने की हमको परमिशन दी गई, उनके रिगार्डिंग क्या होना चाहिए? हमारी अपेक्षाएं बहुत बड़ी है, बहुत सालों बाद ये सपना भी साकार होने वाला है।
देखो, मैं तो पूर्ण आशावादी हूँ। जी ये अयोध्या के मंदिर क्या हो, मथुरा में क्यों, मैं तो पूर्ण आशावादी हूँ, भारत अखंड बनेगा। जी और ज़्यादा समय नहीं है, मेरा तो विश्वास है हमारे रहते रहते हुए ही हम दिखेंगे भारत अखंड। वैदिक भारत सनातन धर्म विश्वव्यापी उसका प्रभाव होगा, ये मेरा हृदय का विश्वास और आस्था ही है। જી ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે સૌ આશાવાદી છે. મહારાજ દ્વારા જ કહેવામાં આવ્યું છે અયોધ્યામાં રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ, ત્યારબાદ મથુરામાં ભગવાન કૃષ્ણની મંદિરની વાત થઈ, તો એવા કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રીએ કહ્યું કે આપણા જીવતા જીવતા જ આ બધું આપણે જોઈશું. એનો એક મીઠો એક ટૂંકો ટકોર એ છે કે ત્યાં ભગવાન રામલલ્લાનું જેવું અયોધ્યામાં મંદિર બન્યું ત્યાં પણ કૃષ્ણનું મંદિર બનશે જ, એવી એક આશા ઊભી થઈ છે. પરંતુ દર્શક મિત્રો, ક્રિયા યોગા, સક્સેસ ઇન લાઈફ થ્રુ ધ ક્રિયા યોગા આજે એક બહુ જ મોટો ઇવેન્ટ છે. અને આ ઇવેન્ટમાં તમામ યંગસ્ટરની સાથે સાથે વડોદરા શહેર જ નહીં પરંતુ ગુજરાતમાંથી જેટલા પણ લોકો યોગા થકી પોતાનું મન કેન્દ્રિત કરવા માંગતા હોય છે તે લોકોને જ એક રિક્વેસ્ટ, એક વિનંતી કે આજે એક મોટા ઇવેન્ટમાં જે ફ્રી ઓફ એન્ટ્રી, આની એન્ટ્રી પણ ફ્રી રાખવામાં આવી છે, તો અહીંયાથી એકવાર અચૂક પધારે. માણસનું મન ચંચળ છે અને એ ચંચળ મનને લઈને કોન્સન્ટ્રેટ કરવું કોઈ પણ જગ્યાએ, કોઈ પણ ફિલ્ડ પર, કોઈ પણ એક્ટિવિટી પર, ઇટ્સ અ ટુ ડિફિકલ્ટ. જેટલું ધારીએ એના કરતાં પણ અઘરું છે. તો ક્રિયા યોગા દ્વારા આજના દિવસ, જ્યારે આજે યોગ નિકેતન નિઝામપુરા પાસે જ 6 થી 8 વાગ્યાના અરસામાં આ એક ઇવેન્ટ, એક કાર્યક્રમ કહી શકાય. અને આ જ કાર્યક્રમમાં મહારાષ્ટ્રી ખુદ ઉપસ્થિત રહેશે અને તેઓની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં જ આ કાર્યક્રમ થવાનો છે. તો શહેરીજનોના તમામ યંગસ્ટરોને એક રિક્વેસ્ટ કરવા માગું છું કે લાઈફમાં જ્યારે અપડાઉન્સ આવે છે ત્યારે કે આપણે ક્યારે હલી જઈએ છીએ, પરંતુ સક્સેસ કન્ટિન્યુ આપણે કેવી રીતે વિચાર કરી શકીએ, કેવી રીતે એની પાછળ કેવી રીતે ડોટ મૂકી શકાય, એ તમામ બાબતે આ સંતો મહંતોના મોટિવેશન દ્વારા જ મળતી હોય છે. અને તેઓ દ્વારા જ, તેઓની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ક્રિયા યોગાનું ઇવેન્ટ નિઝામપુરા ખાતે રાખવામાં આવ્યું છે. તમામ દર્શક મિત્રોએ ફ્રી ઓફ એન્ટ્રી હોવાથી જ ત્યાં તમે જઈ અને ભાગ લઈ શકો છો અને જીવનમાં જે ધારો છો તે અચીવ કરવા માટે એક ક્રિયા યોગામાં ભાગ લઈ શકો છો. કેમેરા નિખિલ રાવલ સાથે હું બિરેન, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ.